Okay, so yesterday we were discussing tree terminologies and then we had discussed the different types of trees. We had discussed what is a general tree, what is a forest, what is a binary tree, what is a binary search tree, and what is meant by expression tree and tournament trees. Somebody tell me what is a general tree? Somebody tell me what is meant by a general tree? Should I call out? Who will tell me what is meant by a general tree? मैम जनरल ट्री में मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं होंगे कि बाइनरी है या कि उसके कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं और कितने भी चाइल्ड नहीं, कितने भी सब ट्रीज सब ट्रीज हाँ में. सब ट्रीज हो सकता है वही Okay. Who will tell me? Somebody else. Tell me what is a binary tree? Ma'am, in which each node has two childs, only two childs, Rubin. maximum two childs, 0, 1, 2. No, don't say only two child. Every Maximum node can have two. maximum two, 0, 1 or 2 child. Maximum 2 child. Okay, somebody tell me what is a binary search tree? मैम बाइनरी सर्च ट्री मतलब राइट साइड में बड़े होंगे लेफ्ट साइड में छोटे होंगे और वो हर एक के लिए वैलिड होगा It is that property is valid for every subtree. yeah. Okay. What is an expression tree? Somebody else? मैम लीफ नोड में ऑपरेंड्स हो गए और ऊपर लीफ नोड में ऑपरेंड्स हो गए और रूट के मतलब जो अपर साइड है उधर ये हो गया ऑपरेटर Operator. So it is used to represent algebraic or mathematical expression. Somebody tell me what is a tournament tree? मैम Ma'am, it is टूर्नामेंट्री मतलब tournaments like नीचे से ऊपर we'll have participants at the leaves and we'll go on upper to side. the winner Interior nodes are winners winner of every level, right? Yes. This was what we discussed yesterday. We'll continue with the same topic. Then we were talking about different types of binary trees. So what we saw yesterday was different types of trees. Now today we'll see what are the different types of binary trees. तो उसमें एक दो तो आपको already पता है. Binary search tree is also a type of binary tree. So you know what is meant by a binary search tree. You know what is an expression tree. You know what is a tournament tree. You do not know what is a complete binary tree and what is an extended binary tree. So these are all binary trees. Okay. So when you get the question, explain the different type of trees. तो question ध्यान से पढ़ो. आप लोग कुछ कोई भी चीज ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो. जो भी मैसेज डालते हैं आधा अधूरा पढ़ते हो और फिर मैसेज करते हो. हाँ. So read the question properly. If it is the different types of trees, you have to explain general trees, forest, binary tree, binary search tree, expression tree, and tournament trees. yes ma'am okay. If it is binary tree, if it is specifically mentioned binary tree, then you will have to explain binary search tree, expression trees, tournament trees, and then complete binary tree and extended binary tree. Okay. Now we'll see what is meant by a complete binary tree and what is meant by an extended binary tree. Okay. First, beginning with complete binary tree. Complete binary tree is a binary tree, right? That is there in the name itself. It's a binary tree which has two properties. What are the two properties? First, in a complete binary tree, every level except possibly the last is completely filled. Okay? Every level completely filled means what? Every level except possibly the last is completely filled. Completely filled matlab सबके दो बच्चे होंगे. Okay? So if you see here, this level is completely filled. This level is also completely filled. See, इसके दो बच्चे हैं, इसके दो बच्चे हैं. But when you see the last level, हाँ मैम वो नहीं है it is not completely filled. Okay. So one criteria is that every level except possibly the last is completely filled. Second one is that all nodes appear as far left as possible. तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो missing है that is towards the right side. Rest left में जो है that is almost kind of filled. So there are two criterias, two properties. Every level except possibly the last is completely filled and all the nodes appear as far left as possible. Okay.
and there is a standard मैम formula. एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल का मतलब बताएंगे? मतलब ये देखो, ये लेफ्ट साइड, यू व्हेन यू ऑब्जर्व द लेफ्ट साइड, दिस इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट? यहाँ पे मिसिंग है, तो दैट इज मतलब ये व्हाट. बाइनरी, ये कंप्लीट बाइनरी है हाँ, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है. इट्स मतलब जस्ट, लेफ्ट साइड फुल होना चाहिए, राइट साइड कुछ भी हो नहीं फर्क। हाँ, ओके okay. So there is a standard formula for computing the height of a complete binary tree, which is given by log of n plus 1, absolute value of log of n plus 1, whereas n is the number of trees. Sorry, n is the number of nodes in मैम, your वो tree. लॉग स्क्वायर एन है या फिर लॉग बेस 2 है? Log base 2 है, it's log base लॉग 2. बेस 2। ओके Okay. So say if you're given that a tree has 10,000 nodes, then you can estimate the height of the tree by using this formula, log to the base 2. Okay. मतलब number of nodes कितने हैं? 10 lakh plus 1. So you'll get the height as 21. So this is standard formula which is used for estimating the height of a complete binary tree. This I'm mentioning this only because in some competitive exams, they ask this. I mean, given a particular tree has a complete binary has this many number of nodes, estimate what is the height, and then you have the options. That's the only reason which I'm mentioning this formula. Okay. As of now, you have to just understand that a complete binary tree is a tree where all levels except possibly the last is completely filled. Okay. Then coming to the next type of binary tree, which is called as extended binary tree. Extended binary tree is also a binary tree. Here the property is that either no child or exactly two child. Every node can have either no child or two child. मतलब one child वाला कोई case हो ही नहीं सकता. So if you see this particular tree, this is not a extended binary tree. Why? इसके दो बच्चे हैं. इस when you consider this node, it has only one child. Right, so it does not satisfy our property. What is our property? Either no child or exactly two child. Matlab, what if you add one more node here? If you add one more node here, and there's one more node which is violating our property, this node is also having only one child. So if you add one more node over here, what you can convert your normal binary tree into an extended binary tree. Okay, so normal binary trees can be converted into extended binary tree by attaching one more node to those nodes which are having only one child. Okay, so extended binary tree is also just a variation of a binary tree where every node can have either no child or exactly two child. Okay, these are the different types of binary trees. It's just a theoretical question that can be expected. Now proceeding to the next topic, which is representation of binary trees in memory. So just like stacks and queues, trees can also be implemented using arrays as well as linked lists. We normally do not use array representation. We use linked list representation only for representing trees. And I've already told you, if you want to represent a tree like this, A, B, C, then if you're using a linked list representation, then this is how you will represent your tree. B, left and right will be null because it does not have any left and right child. And then C, left and right will be a null because it does not have a left or right child. So this is the corresponding linked list representation of your tree. So what are you doing in your linked list representation? In your linked list representation, your every node is having three fields. One is your data field. One field is for the left child. That means it will give you the address of the left child. And this field will give you the address of the right child. That means every node is having three fields, one data field and two address field. That means if you are going to implement a binary tree using linked list, then this is how you will write your node declaration. So in your node declaration, you will have to show three field, one data field and two pointer field. One pointer will be your left pointer, left child pointer, and the other pointer field will be your right child pointer. So just like other data structures, binary trees can also be represented using arrays or linked lists. In case you are using linked list, this is how we'll declare the node declaration. Is that clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Now, if it is an array representation, that means if you want to represent a tree using an array, say this is a tree, okay? This is a tree with data values 20, 15, 35, 12, 17, 16, 18, 21, 39, 36, 45. Okay, some random values. This is just a tree. If I want to represent it in the form of an array, you can see this is my array. This rectangular shape is my array, okay? If this is a of 0, this is a of 1, this is a of 2, and so on. So what have I done? The root node is always stored at array index 0. So ये 20 जो है वो a of 0 में store होगा. And उसके बाद 20 के जो बच्चे हैं 15 and 35 will get stored according to this formula. That means left child will go into 2k and right child will go into 2k plus 1. मतलब ये अपना फर्स्ट नोड है, तो इसका चाइल्ड कहाँ पे स्टोर होगा 2k, मतलब 2 into 1, 2k plus 1 means 2 into 1 plus 1, मतलब ये 2 है और ये 3 है, मतलब इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है 15 that will go into array index 2 and इसका जो राइट चाइल्ड है 35 that will go into array index 3. तो आप यहाँ पे देखो array index 2 and array index 3 देखो, 2 पे क्या स्टोर हो गया 15, 3 पे क्या स्टोर हुआ है 35. Same way, if I want to find out where will the children of this particular node get stored, what will I do? This is node number 2. So it would be what? 2 into 2 and 2 into 2 plus 1. So it is 4 and it is 5. तो 15 के बच्चे कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? 15 के चाइल्ड नोड्स क्या है? 12 and 17. Where are 12 and 17 getting stored? It is getting stored in array index 4 and 5. So this is how you represent binary trees using arrays. But we normally do not prefer array representation, right? Because it creates a lot of memory wastage. So when we are implementing trees, which is the preferred representation? The preferred representation is linked list only. So we in class also, when we are implementing binary tree, binary search tree and all, we'll go for the linked list representation only because of its advantages, which you already know. What is the advantage of linked representation, right? So there are two ways in which you can represent trees, either using arrays or using linked list. Is that clear? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So the probable questions that you can expect from this topic is define a tree. Again, can be asked for 2 or 3 marks. Define a tree means you have to explain what is a tree and then draw a diagram and demonstrate. Say you have to demonstrate what is root, show the root, show the nodes, show what is this edge. Then you can say these and these are siblings. So you should demonstrate with a diagram. Okay. The first question for your UT was explain data structures. Explain the different types of data structures, right? Half of you have drawn only the diagram. Not half, majority of the class has only drawn the diagram. How can you expect somebody to give you 10 marks only for the diagram? See, when in university exam you get these questions, there is a blueprint, there is a key for every question. So in that you will have the split up, like say 4 marks for diagram or 5 marks for diagram, 5 marks for the explanation. So we are bound to check it within that using that key. So that means if 5 marks is allotted for the diagram, I'll be able to give you 5 marks only. You lose remaining 5 marks. Same thing for this UT, I've given slight consideration, but if you do this in university exam, even if I give you the marks, the moderator will definitely cut it off. Okay. So when the question is explained, you have to explain. Just simply drawing the diagram is not sufficient. You cannot expect the examiner to give you 10 marks for simply drawing a diagram. Majority of the class has just drawn the diagram and left it for 10 marks. It's a 10-mark question. If it was a 5-mark question, it was sufficient to just draw the diagram. It's a 10-mark question, right? Another question that you can expect is explain tree terminology. So you may get 2 or 3 terminologies will be given and you have to just explain them with a diagram. Different types of trees, different types of binary trees, how trees are represented in memory. That means you have to say array representation and linked representation and just demonstrate it with an example. You can also get questions like explain expression trees or explain binary search trees.
In all cases, whenever you get the explained question, always support your answer with an example. Okay. For example, ADT पूछा है, explain ADT पूछा है, तो it is expected that you give an example for an ADT. You can either write the ADT of push operation or pop operation, या Q का कोई operation का ADT आप लिख सकते हो, या array का ADT आप लिख सकते हो. Every answer demonstrate it, support it with an example, that will fetch you more marks. Okay. Now, let's proceed to today's agenda, which is to discuss tree traversal. Okay. Your video is not Very visible. interesting topic. Check again. At the same time, you every time in GATE exam, you can I mean, I've seen questions from this topic in every year. Tree traversal. Okay. Yeah. GATE and all other competitive That's now exams. visible. Now let's understand what is traversal, what is meant by, what are the different types of traversals, and how do you construct a tree given the traversal order. This is what we are going to see now. Okay, first let's see what is traversal and what are the different types of traversal. So you all know what is meant by traversal, right? Traversal means what? Visiting the nodes. If you have a linked list, what do you mean by traversal? What do you mean by traversal? You're basically you're visiting every node in your tree. Your objective might be different. Sometimes you might be visiting just to print the values which are there in the node. Sometimes you might be visiting just to count how many nodes are there in your linked list. Or sometimes you may have a different purpose, right? You may be searching for a particular value. Whatever your objective is, traversal means the same. That means you're visiting every node in the linked list. Same thing applies to a tree also. So if I say tree traversal, then it means what? It simply means you're visiting every node in the tree for some specific purpose. Okay. So what is the meaning of tree traversal? Tree traversal basically means you're visiting every node in the tree for doing some processing or operation on every node. Is that clear? Aniket Kargotkar, please switch on the camera. Is that clear? Yes or no? Yes, ma'am. So there are different types of traversals: pre-order, in-order, post-order, and level order. Okay, 4 basic types of traversals: pre-order, in-order, post-order, and level order. Now let's see what is meant by pre-order first. Pre-order traversal means you'll visit the root node first, followed by the left subtree, followed by the right subtree. Okay, so if you have a tree like this, A, B, C, and I am doing traversal for printing. So tell me what would be the order in which this gets printed? Who first? A, A. Root node first. Then B, B, then C. and then C. Right now you are having only 3 nodes, so it's easy. A, B, C. Suppose you have a tree like this. A, B, C, D, E. Okay. Suppose your tree is like this. Now you people tell me what is the traversal order? A, A, then B, C, C, D, Hmm. then and E. E. This is also easy. A, B, C, D. But what are you actually doing? Look at the algorithm for pre-order traversal. This is the algorithm for pre-order traversal. Okay. You are expected to first What is the first step? yourself and then display your While tree not icon. equal to null. Present and then show your icon. While tree not equal to null means tree is a pointer variable. Okay. That means as long as there are nodes in your tree, okay, when tree comes here, when tree pointer comes here, then there's no node. That means your tree is becoming null. So tree is basically a pointer variable. So as long as that pointer is not null, you have to repeat this process, these 3 steps. What are the 3 steps? Write tree of data. Write means basically print. Okay, you're printing tree of data. That means if if the node has data I, you're printing that. Then what is this? What is this? Pre-order of tree of left and pre-order of tree of right. What does that mean? What does that mean?
First we are printing the left side data, then we are printing the right side data. We are not printing it. This is what? What is this? This is a function. Traversal. This is a function call. This is a function call to the. This is a function called to the same function. What is the name of this function? The name of this function is pre-order. What are you initially taking? You are initially taking a pointer. Start. Start यहाँ पे कहाँ पे होगा? अगर आपको Root ट्रैवल node. स्टार्ट करना है हमेशा रूट नोड पे होगा. So who is tree? Who is tree? Tree is the pointer to the root node. So तो आप क्या कर रहे हो? यू आर प्रिंटिंग ट्री ऑफ डेटा. मतलब जो रूट नोड में जो डेटा है वो आप प्रिंट कर रहे हो. उसके बाद क्या कर रहे हो आप? उसके बाद यू आर कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन बट दिस टाइम ऑन द लेफ्ट सब ट्री. एंड देन वंस दिस इज डन यू विल कॉल द सेम फंक्शन अगेन, दिस टाइम ऑन द राइट सब ट्री. मतलब अगर आपका ट्री ऐसा है, ए, पे अटेंशन एवरीबॉडी, ए बी सी डी ई, मतलब हर नोड पे 3 स्टेप होगा. ओके, ऑन एवरी नोड यू आर एक्चुअली डूइंग 3 स्टेप्स. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज प्रिंट टी. मतलब जो भी नोड में डेटा है वो आप राइट या प्रिंट कर रहे हो. ओके, दैट मीन्स अभी यहाँ पे क्या होगा? ए प्रिंट होगा. सेकेंड स्टेप क्या है आपका? सेकेंड स्टेप इज यू आर कॉलिंग द सेम फंक्शन बट दिस टाइम ऑन द लेफ्ट सब ट्री. मतलब आप जाओगे किधर? आप ये नोड के लेफ्ट साइड लेफ्ट सब ट्री में जाओगे. मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप नहीं हुआ है. हाँ, अभी आप करंटली सेकंड स्टेप में हो बिकॉज यू कॉल द सेम फंक्शन ऑन द लेफ्ट सब ट्री. मतलब आप इस तरफ आ गए. अभी आपका रूट नोड कौन है? अभी आपका बी है. मतलब फिर से आपने सेम फंक्शन को फिर से कॉल किया है. मतलब यहाँ पे फिर से वही 3 स्टेप होगा. फर्स्ट स्टेप क्या है अपना? प्रिंट करना. मतलब इस बार क्या प्रिंट होगा? इस बार क्या प्रिंट होगा? जो बी प्रिंट होगा. फिर सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है? प्री ऑर्डर ऑन द लेफ्ट सब ट्री. मतलब यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर से हम सेकेंड स्टेप कर रहे हैं. प्री ऑर्डर ऑन लेफ्ट सब ट्री. लेफ्ट सब ट्री किसके लेफ्ट सब ट्री? बी के लेफ्ट सब ट्री. मतलब आप फिर से नीचे आ गए, यहाँ पे आ गए. यहाँ पे भी 3 स्टेप होगा क्योंकि आपने सेम प्री ऑर्डर फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया है. फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज प्रिंट. सो दिस टाइम व्हाट विल गेट प्रिंटेड? व्हाट विल गेट प्रिंटेड? D. D will get printed. फिर से नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? प्री ऑर्डर ऑन लेफ्ट सब ट्री. अभी इसका कोई लेफ्ट है क्या? No. नहीं है. तो ये हो गया, ये हो गया. इसका कोई लेफ्ट नहीं है. तो ये कब तक when will this execute? This will execute as long as tree is not null. Not null. As long as your pointer is not null. When you're coming this side, your pointer is becoming a null, right? क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं है D का, तो मतलब लेफ्ट ट्रैवर्सल तो नहीं होगा. Then what you're doing? You'll come back and complete this last step. What is this last step? Pre-order on Right. Right भी नहीं होगा. इसका कोई right है क्या? No. No. मतलब वो भी नहीं होगा. मतलब यहाँ का 3 स्टेप हो गया है. यहाँ का 3 स्टेप होने के बाद आप वापस कहाँ जाओगे? आपने रिकर्शन यूज किया है, तो आप कहाँ पे जाओगे? द कॉलिंग फंक्शन. Who is the calling function? B. यहाँ पे कौन सा स्टेप बाकी है? राइट साइड वाला थर्ड. राइट साइड वाला स्टेप बाकी है. मतलब अभी आप किस डायरेक्शन में जाओगे? ये डायरेक्शन में. ये मतलब अभी तक आपने किस किस को प्रिंट किया है? ए को प्रिंट किया, बी को प्रिंट किया, डी को प्रिंट किया. नाउ यू आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन. This time what will happen? When you're coming in this direction, which function have you called? You have called pre-order on right. यहाँ आ गए. यहाँ पे फिर से वो 3 स्टेप होगा क्योंकि आप रिकर्शन यूज कर रहे हो और ये फंक्शन में 3 स्टेप है, तो यहाँ पे भी वो 3 स्टेप होगा. What is the first step? What is the first step? प्रिंट द रूट नोड. इस बार कौन प्रिंट होगा? E. सेकेंड स्टेप क्या है? प्री ऑर्डर ऑन लेफ्ट साइड. कोई है क्या लेफ्ट? नहीं. थर्ड स्टेप क्या है? प्री ऑर्डर ऑन राइट. कोई है क्या राइट? नो. No. मतलब यहाँ का 3 स्टेप हो गया. यहाँ का 3 Yes, स्टेप. ma'am. वापस कहाँ जाओगे आप? कॉलिंग फंक्शन. हु वाज द कॉलिंग फंक्शन? यहाँ पे.
यहाँ पे A. हाँ, यहाँ पे फर्स्ट 2 स्टेप ही हुआ है, थर्ड स्टेप हुआ नहीं है, मतलब आपको थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है। थर्ड स्टेप क्या है? प्री ऑर्डर ऑन C. राइट, मतलब आप ये साइड आओगे, राइट पे आओगे। फिर से यहाँ पे 3 स्टेप होगा। प्रिंट C चेक दोनों नल है तो वापस A पे जाएंगे एंड A कंप्लीटेड। एंड देन योर प्रोसेस इज कंप्लीटेड। क्योंकि इसके कोई बच्चे नहीं है तो प्री ऑर्डर और लेफ्ट एंड राइट विल नॉट हैपन। सो दिस इज योर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑर्डर। सबको समझ में आया? Then let's not Yes, ma'am. Yes. So what is the body of the pre-order function? First step is print. Print what is there in the node. Node में जो data है, node of data आप print कर रहे हो. Second step क्या है? You are calling pre-order, the same function, but this time on the node's left subtree. And what is the third step? You are calling the same function, but this time on the node's right subtree. Okay? So pre-order मतलब node, left subtree and then right subtree. Okay? So it's not just printing left subtree and right subtree. It is calling the same function again on the left subtree and the right subtree. Okay? Now, so if it is if this is your tree, version pre-order traversal is ABC. all in the frame. Now, Place the camera a little farther from you. I'll give you a Keep shortcut some space between the camera and for you. Is it a laptop or a mobile? calculating pre-order. अगर गेट एग्जाम में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसा एक डायग्राम दिया है एंड इफ यू आर आस्क्ड टू राइट द प्री ऑर्डर, हाउ विल यू राइट? इज अ शॉर्टकट. ओके, द शॉर्टकट इज दैट यू हैव टू काउंट द फर्स्ट विजिट टू अ पर्टिकुलर नोड. प्री ऑर्डर मीन्स you have to count the first visit to a particular node. मतलब आप रूट नोड से शुरू करके you're traveling, okay, starting from the root node. So जब मैं ऐसे जा रही हूँ, this is my first visit to A, correct? I'm meeting A here. So this is my first visit. That means pre-order में मेरा first node क्या होगा? A. उसके बाद मैं ऐसे आ रही हूँ, I'm coming like this. Here I'm meeting B for the first time. That means B will be my next node in the pre-order. I'm coming like this. I'm meeting D for the first time. That means D will be the next node in my pre-order. I'm coming like this. I'm meeting G. That means G will be the next node in my pre-order. Okay? अभी इसके बच्चे नहीं है. ओके, तो मैं ऐसे जाऊंगी, ऐसे आके ऐसे. It's blurred. I cannot अभी see मैं anything on your icon. now this is my which visit? Now this is my which visit? सेकेंड है. यहाँ पे मैं ऑलरेडी डी से मिल चुकी हूँ. जब मैं ऐसे आ रही हूँ, ये मेरा सेकेंड विजिट है. हाँ, then I'll come like this. I'm meeting H for the first time. So that means next is H. Then इसके कोई बच्चे नहीं है तो मैं ऐसे आके ऐसे जाऊंगी. Now see, I'm visiting D. I'm visiting third time. Okay, तो मैं ऐसे जा रही हूँ. Again I'm visiting B the second time. अभी हमें सिर्फ फर्स्ट विजिट का काउंट करना है. E फर्स्ट टाइम, दैट मीन्स E सेकेंड टाइम, सेकेंड इज नॉट रिक्वायर्ड. I फर्स्ट टाइम. ओके, I के कोई बच्चे नहीं है. से देखो, I थर्ड टाइम, E थर्ड टाइम, B थर्ड टाइम, A सेकेंड टाइम, C फर्स्ट टाइम, F फर्स्ट टाइम, F second time, J first time. Yeah, okay. Okay. Yash Paul. ऐसे वापस जाऊंगी मैं. So what is my pre-order traversal order? Yes. A B D G H E I C. I missed F. I missed to write F here. Okay, F and J. Okay. So what is the shortcut for writing pre-order? You have to count the Yes, got it. first visit only. Okay, so that is pre-order. समझा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you people tell me what is the pre-order of this tree. अभी बताओ मुझे जल्दी से. Okay. Division, multiplication, addition. Multiplication. Division. minus C, Multiplication Hmm. plus Hmm. A, A, B, then B,
Hmm. minus माइनस सी C, Hmm. D, डी Hmm. प्लस You don't have original? ई E, and एफ. F. ये तो आप देख के ही बता सकते हैं. सो दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. Okay. तो आप जब ये लिख रहे हो ना, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ योर एक्सप्रेशन. मतलब अगर कोई इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी ट्री, एनी एक्सप्रेशन एज अ expression tree, this is an expression tree, right now this is an expression tree. So when you're writing any expression in the form of an expression tree, and if you then write the pre-order, Okay. then what you get as result is what is the prefix form of your expression. You know what is infix, postfix and prefix, हाँ right? मैम, हाँ मैम. So what the result that you get is the prefix form of your expression. It's just a second. Now, so this is pre-order. Please show I will the go iPad to again. Yeah. Sorry. in order, okay? Pre-order, in order, post-order, level order. These are the 4 traversals. मैम उसमें ब्रैकेट्स कैसे वर्क करते हैं या नहीं होते? नहीं होते होंगे ना? नहीं, brackets नहीं होते, हाँ भाई. okay? अभी in order देखिए. नहीं, बट मैम प्रीफिक्स में ब्रैकेट्स भी ऐड करते हैं ना. इफ आई वांट टू कन्वर्ट एक्सप्रेशन विद ब्रैकेट्स इनटू प्रीफिक्स आई कैन डू दैट. तो पर प्रीफिक्स प्रीफिक्स प्री में ऑर्डर ब्रैकेट ट्रैवल लिखते हैं ना. लिखते हैं ना. We don't evaluate in prefix form, right? We convert it into postfix and then evaluate. And हाँ postfix हाँ में भाई, parenthesis नहीं आते हैं. नहीं आते पैरेंथेसिस भाई. ओके. Okay. Now in order traversal. In order traversal का sequence देखो. पहले left subtree, फिर node, फिर root node, and then right subtree. So it is Yes. first left Okay, got subtree, then root node, and then right subtree. So that means you look at the algorithm. So what is this? This is sorry, not Please pre. mute yourself. This is in order of tree. Oh, Pooja. Okay, this is the function. What is your first step? As long as tree is not equal to null, that means as long as the pointer is not null, that means as long as there are nodes in your tree which you're visiting. What is your first step? First step is you're calling the same function on the left It's not subtree. visible, it's blurred. Then your second step is doing that printing job. Third step is you're calling the same function but this time on the right subtree. Yes. Pre-order में कैसा था? Pre-order में first you Okay, print, got it. you write a print, and then you call pre-order on the left subtree, and then you call pre-order on the right subtree. So it was root, left, right. In order में कैसा है? Printing बीच में आएगा. First you will call in order on the left subtree, then you will print, and then you will call in order on the right subtree. तो अगर ये A, B, C है, Okay. तो इसका in order बताओ. Moksha Shinde. Got it. इसका in order क्या है? मैम B, A, C. बी ए A, C. क्योंकि आप कर क्या रहे हो? Muzammil Siddiqui. First step in your algorithm is you're going left. That means 3 स्टेप होना चाहिए यहाँ पे. फर्स्ट स्टेप ही क्या है? लेफ्ट जाओ. फर्स्ट स्टेप ही बोल रहा है कि लेफ्ट जाओ, मतलब आप यहाँ पे आ जाओगे. फिर से यहाँ पे 3 स्टेप होगा. यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? लेफ्ट जाओ, बट इसका कोई लेफ्ट है ही नहीं है, मतलब आप सेकेंड स्टेप पे आ जाओगे. सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है? प्रिंट है. क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? बी प्रिंट होगा. तो सेकेंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप क्या है? राइट जाओ. अभी इसका कोई राइट है ही नहीं, मतलब यहाँ का तीनों स्टेप हो गया, राइट? 3 स्टेप हो गया. तो 3 स्टेप हो गया, तो वापस कहाँ पे जाओगे? यहाँ पे ऊपर द कॉलिंग फंक्शन. तो यहाँ पे कौन सा स्टेप बाकी है? यहाँ पे एक ही स्टेप हुआ है, लेफ्ट गए थे आप, तो बाकी के 2 स्टेप पेंडिंग है. मतलब सेकेंड स्टेप क्या है अभी? सेकेंड स्टेप इज प्रिंटिंग. व्हाट विल गेट प्रिंटेड दिस टाइम? A will get printed. Just a second. तो सेकेंड स्टेप भी हो गया. अभी क्या बाकी है? थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप इज टेलिंग यू टू गो राइट, सो यू विल गो राइट. यहाँ पे फिर से 3 स्टेप बाकी है. फर्स्ट स्टेप क्या है? गो लेफ्ट, बट यहाँ पे Just a second. Hold it there. लेफ्ट जाने के लिए कोई नहीं है, तो Make it a little. वो हो गया. तो सेकेंड स्टेप क्या है? प्रिंट है. क्या प्रिंट होगा इस बार? सी प्रिंट होगा. एंड थर्ड स्टेप में यू कैन नॉट गो टू द राइट बिकॉज देयर इज नो राइट सबट्री. मतलब इन द प्रोसेस आपका क्या हो गया? पीटीआर नल हो गया है एंड बीएससी प्रिंट भी हो गया है स्क्रीन पे, कंसोल पे. तो दिस इज कॉल्ड एज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. Upadhyay. समझ में आ रहा है सबको? Amit. Yes, यस ma'am. मैम. Yes. Yes. Okay, so this is the body of, this is how you'll write the body of the function. As long as pointer is not null, I cannot. call in order on the left subtree, print, call in order on the Yeah. right subtree. Okay, this is what is meant by in order traversal. So
ABC है तो BAC will be your in order. हाँ, अभी आप बताओ यहाँ पे हम कौन, लेट मी टेल यू द शॉर्टकट क्या है यहाँ पे, कौन सा विजिट हम काउंट करेंगे, कौन सा विजिट काउंट करेंगे, कौन सा विजिट, मैम नीचे से ऊपर आएंगे। Second. सेकेंड विजिट। ओके, अभी आप देखो, फर्स्ट विजिट नहीं लेंगे, फर्स्ट विजिट नहीं लेंगे, फर्स्ट विजिट नहीं लेंगे, फर्स्ट विजिट नहीं लेंगे, ऐसे आ रहे हैं हम, तो ये कौन सा विजिट हुआ, Second. सेकेंड। सेकेंड तो क्या हो गया, G विल गेट प्रिंटेड, ऐसे आके ऐसे जा रही हूं मैं। हाँ, ये कौन सा विजिट हुआ, Second. सेकेंड, तो D भी आ गया। ऐसे आ रही हूँ, फर्स्ट विजिट नहीं चाहिए, सेकेंड विजिट, मतलब क्या प्रिंट होगा, H। फिर ऐसे जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, ये कौन सा विजिट हुआ, सेकेंड विजिट, मतलब B आ गया। I'm going like this, I'm going like this, first visit no, second visit yes, I'm coming like this, first visit no, second visit yes, थर्ड विजिट है, ये सब नहीं चाहिए, अभी हम जाएंगे सेकेंड विजिट। तो A ऐसे आ रहे हैं, फर्स्ट विजिट नो, फर्स्ट विजिट नो, सेकेंड विजिट F, फर्स्ट विजिट नो, सेकेंड विजिट yes, J, थर्ड विजिट यहाँ पे जब आएंगे C का सेकेंड विजिट है, and we'll go back. So what are we counting here? We are counting the second visit to write in order traversal. समझ में आया ये फर्स्ट और सेकंड कैसे काउंट कर रहे हैं? हाँ मैम। हाँ, तो ये गेट में सब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, where you'll be given a tree and you'll be asked to write the in order traversal. तो ये शॉर्टकट यूज करके जल्दी से लिखने का। हाँ, you cannot go working that logic, the coding logic over there. Use shortcuts. This is called as in order traversal. Okay. In order लिखने का और एक तरीका है, which is called as projection और squishing method बोलते हैं उसको। मतलब आप एक लाइन, draw a line, perpendicular line, and then write down whatever you're getting. See, G, D, H, B, E, I, A, F, J, and C. This is your in order. This is another shortcut for writing the in order. Either you can count the second visit or you can just squish it and then write the in order. Clear? Yes, ma'am. Yes. Okay. यस मैम। तो in order का output क्या है? In order का output क्या है? If it is an expression tree and if you write the in order traversal, what you get? You get the मैम infix इनफिक्स In फॉर्म fixed मिलता है। form. infix form of the expression, okay, without parenthesis. Now coming to last order, not last, second last, post order. What is post order? तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया है क्या? इन ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में आपके ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है? प्री ऑर्डर में आपके ऑर्डर में सबसे शुरुआत में कौन आ रहा है? मैम सबसे Root. शुरुआत में रूट आ रहा है। रूट नोड आ रहा है। इन और ऑर्डर इसमें में, leaves आ रहा है. इन ऑर्डर में आपका जो रूट नोड है वो बीच में कहीं आएगा और Yes. पोस्ट ऑर्डर में, लास्ट में आएगा। Last में. हाँ, पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड लास्ट में लास्ट में आएगा। आएगा। तो यहाँ पे देखो, post order traversal, the steps is first visit the left subtree, then visit the right subtree, and then visit the root node. So it is left, right, and then root. Okay? तो याद रखो, pre order में कैसा है? Pre order में कैसा है? Pre order, Print, then left. sorry, pre order में root, left, Left and right. right. In order में left, Left, root and right. right. And post order में left, right, and root है. So you can see this is post order on tree. First step is you're calling post order on the left subtree. Second step is post order on the right subtree. And third step is where you're printing the data. तो मतलब अगर आपका ट्री ऐसा है A, B, C, what will be the order? B, C, A. B, C, and A. How did you get it? See, 1, 2, 3.
What is first step? First step says go Left child. First step is left, second step is right, and third step is print. So you'll go left. After going left, again you have to go left. 1, 2, 3. It is left, right, and then your node, right? So again you'll go left. There's nobody in the left, so you'll go back and come back and you'll go right. Nobody in the right, so you'll come back and then you'll print. So what is getting printed? B. And then मतलब यहाँ का 3 step हो गया. That means you'll have to go back to your calling function. You'll come back here. यहाँ पे लेफ्ट तो आप ऑलरेडी जा चुके हो, तो अभी बाकी है राइट. तो आप क्या करोगे? यू विल कम टू द राइट. तो राइट में आके फिर से आपको यहाँ पे 3 स्टेप करना है. क्या है यहाँ पे? लेफ्ट, राइट एंड देन प्रिंट, राइट. तो लेफ्ट कोई नहीं है, राइट कोई नहीं है, प्रिंट होगा. तो क्या प्रिंट हो रहा है? सी. तो यहाँ पे यहाँ का 3 स्टेप हो गया है. वापस आपको जाना है क्योंकि यहाँ का थर्ड स्टेप पेंडिंग है. थर्ड स्टेप क्या है? प्रिंट है. तो लास्ट में क्या प्रिंट होगा? ए प्रिंट होगा. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes. So the order is B, C, A. Now you people tell me, यहाँ पे कौन सा विजिट काउंट करेंगे हम? Third. थर्ड विजिट. ओके, देखो ऐसे आ रही मैं. फर्स्ट विजिट नहीं कंसिडर करना है, फर्स्ट विजिट नहीं कंसिडर करना है, फर्स्ट विजिट नहीं कंसिडर करना है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड विजिट. तो आएगा फर्स्ट कौन? जी. सेकेंड नहीं लेना है, फर्स्ट नहीं लेना है, सेकेंड नहीं लेना है, थर्ड. तो कौन आएगा? एच. यहाँ पे थर्ड, ये देखो फर्स्ट यहाँ पे हुआ, सेकेंड यहाँ पे हुआ, यहाँ थर्ड मीट हो रहा है डी के साथ, तो डी. ये सेकेंड है, नहीं लेना है. फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. मतलब नेक्स्ट कौन आएगा? आई. देन ई. ई के साथ ये कौन सा मीटिंग है? यहाँ पे फर्स्ट हुआ, यहाँ पे सेकेंड हुआ, यहाँ पे थर्ड हो रहा है. मतलब नेक्स्ट कौन आएगा? ई. यहाँ पे कौन सा मीटिंग हो रहा है? यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग हुआ, यहाँ पे सेकेंड मीटिंग हुआ, थर्ड मीटिंग, मतलब बी. जा रहे हैं, सेकेंड मीटिंग है, नहीं चाहिए. फर्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड नहीं चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब कौन? जे. फर्स्ट यहाँ पे हुआ, सेकेंड यहाँ पे हो, थर्ड हो रहा है, मतलब एफ. सेकेंड, थर्ड, सी. और ए का थर्ड मीटिंग यहाँ पे, तो लास्ट है. तो रूट नोड कहाँ पे आ रहा है? रूट नोड इज कमिंग एट द एंड. प्री ऑर्डर में रूट नोड बिगिनिंग में होता है. फर्स्ट नोड विल बी योर रूट नोड. इन ऑर्डर में बीच में होता है. बीच में मतलब नॉट एग्जैक्टली इन द मिडल बट समवेयर इन द मिडल. और पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड कम्स द last. Is that clear everybody? How to write in order, pre-order and post order? Yes, ma'am. Okay. I'll put a, okay. Give me the answer. Give me the answer. A A, B, B. plus plus then C, D minus minus multiplication multiplication E, F. E F plus and then slash. Correct hai? Everybody, others, is it correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is post order. Okay. And the last traversal order is, last type of traversal is level order. Okay. Level order implement. Ma'am, could you just go back to the previous thing? 1 second, just I want to screenshot. Yeah, done, ma'am. Okay, last order is level order traversal. Level order is implemented using a queue data structure. Level order मतलब क्या बताती हूँ? ऐसे जाओगे आप, ऐसे लेवल ऑर्डर मतलब ये देखो A, B, C, मतलब जो लेवल पे, वो लेवल पे जो नोड्स है उसको आप पकड़ रहे हो. फर्स्ट लेवल पे A, सेकेंड लेवल पे B and C, then followed by D, E and F, and then थर्ड लेवल पे G. ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे G, H, I, J. Okay, ऐसे आके ऐसे. This is level order traversal. So मतलब अगर आपका ये ऐसा है, then what is your level order? ऐसे A, B, C is your level order traversal. अगर ट्री ऐसा है A, B, C, D, E, F, तो लेवल ऑर्डर क्या है? A,
B, C, D, E, F. Okay, so that's level order traversal, and this is normally implemented using a queue data structure. Okay, so these are the 4 different types of traversals. Do you have the patience to continue, or tomorrow? Tomorrow. Yes. Okay. So I'll put a homework question. I'll give a tree. तो कल जब आओगे, कल है क्या लेक्चर? कल है, तो कल जब आओगे तो you'll write the all 4 traversal orders for that tree which I'm putting on. I'll put the homework question on the group. Okay. For the given tree, you'll write all the 4 traversal orders and come. Okay. Those have not marked your attendance, mark your attendance in the chat window. Aditya, please place your camera and Others who have marked your attendance can leave. If you have any doubts, you can stay back and ask. And you'll get the guidelines by today evening, okay?